डिपॉजिट रेट है केते इंटरेस्ट रेट दिया हबो केते सुध दिया हबो डिपॉजिट रे कि केते सुध दिया हबो लोन उपरे केते इंटरेस्ट रेट रहिबो सेटा बैंक को सेटा आरबीआई डीरेगुलेट कर देछि नो एज आई मेंशनड in my speech yes for the first quarter this year our projection was Reserve Bank's projection was 7.1%. But actual number which has been given by the first advance estimates given by the National Statistical Office is 6.7%. Now obviously 6.7% would give an impression that it is lower than 7.1 goes without saying. But if you look at the components of the GDP, the main drivers of the GDP growth, whether it is consumption or it is investment, or from the supply side it is manufacturing, services growth, construction sector growth. I think all the sectors, the growth is 7% plus in the first quarter. Two aspects which have slightly pulled it down. One is government expenditure, which is both central government and state government expenditure, perhaps due to the election season between April and June, and operation of the model code of conduct of the election commission. Government expenditure was lower in the first quarter, and when I say government expenditure, it is both central and state government expenditures. But going forward, we would expect the government expenditures, that is both state and central government expenditures, to pick up and provide the required support to growth. The other thing which was slightly lower was agriculture, which grew I think at about 2% or so. But first quarter, it's the second quarter really. Second quarter onwards, from July onwards, the monsoon has been very good. And now it has spread almost to all areas of the country, excepting, say, a few areas. So monsoon is good, looking good. And the agriculture crop sowing is looking very optimistic and, looking very positive. So under these circumstances, I would feel that although the first quarter growth has come at 6.7%, but I think we have reasonably confident expectations that the year, the annual growth which we have projected at 7.2% should materialize in the current year. Rate cut I will not be able to say, because that the monetary policy committee will decide, please. Monetary policy committee decide. Upon Odia channel na English channel? Odia. So seta monetary policy committee amaro rate cut habo ki rate seiti rahibo ki rate badha habo seta seta monetary policy committee decide karibo. Setme mu gote aguru kahiba uchit nuhe. Kintu mu jemti gala monetary policy re kahithili je bartaman amaro inflation amuku 4% re pahunchibaku auri distance achi cover karibaku. July ro inflation 3.5% asichi. सेटा मेनली स्टैटिस्टिकल रीजन जोगु कहीं गला वर्ष जुलाई इनफ्लेशन बेसिस तार से जो बेस इफेक्ट काउंट कले सो इटा 3.5 आछि हमको देखिया को पड़िबो इनफ्लेशन 4% रे पहुंचवा दरकार और सेठी किछ समय रहिबा दरकार आ नहले आपण गोटे वन ऑफ मेजर भाव में थरे इंटरेस्ट बढ़े दौथिबे कमे दौथिबे देखला पुणी इनफ्लेशन अधिक आसथिबो सो सेति कि वन ऑफ नंबर बेसिस रे डिसीजन निया जायनी किंतु मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी डिसाइड करिवो आमर पॉलिसी हला हमें प्राइस स्टेबिलिटी प्रोवाइड करिवो 4% आखा पाखे इनफ्लेशन रखिवो और 4% आखा पाखे इनफ्लेशन जदि रहिबो 4% आखा पाखे जदि इनफ्लेशन रहिबो ताले सेटा देशर प्रगति पे कि बहुत भल आ गोटे क्वेश्चन नहीं सेटा गवर्नमेंट स्कीम से विषय में मोर किछ कहबार नहीं नहीं सेटा देखंतु गवर्नमेंट स्कीम नहीं गवर्नमेंट स्कीम उपरे मु कोनोसी कमेंट देबा को चाहूनी आ आपण आरबीआई रिलेटेड मैटर पचार देखंतु डिपॉजिट बढ़िया पे न्यू स्कीम हमर रिस्पांसिबिलिटी नहीं शुणतु डिपॉजिट रेट है केते इंटरेस्ट रेट दिया हबो केते सुध दिया हबो डिपॉजिट रे कि केते सुध दिया हबो लोन उपरे केते इंटरेस्ट रेट रहिबो सेटा बैंक को सेटा आरबीआई डीरेगुलेट कर देछि बैंक रो सेटा कमर्शियल डिसीजन हबो बैंक माने एटा तांकर निजर से माने निजे डिसाइड करिवे तांकर मैनेजमेंट डिसाइड करिवो मु गला मॉनेटरी पॉलिसी रे कहिथिली जे बैंक मानु को हमें अपील करछु जे डिपॉजिट ग्रोथ बढ़िया दरकार आ प्रत्येक बैंक तांकर जो ब्रांच नेटवर्क अछि सारा देश सारा से ब्रांच नेटवर्क को ताकू यूटिलाइज करी आउ नुआ टाइप रो डिपॉजिट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर करी
डिपॉजिट मोबिलाइजेशन बढ़ेवा पे कि सो वर्तमान से कि एक्शन जोटा जो पदक्षेप निया सेटा बैंक मान ऊपर निर्भर करुच्ची एवं आमे आशायी जे बैंक माने निश्चय करेंगे।